Good morning to all students. Today we are going to solve question number 18, page number 108 from our BK board textbook. Now this is solve question from our BK textbook. But before beginning of this question, I would like to instruct you that there is one printing mistake in this question. Now actual amount of magazine and newspaper is 6,000, okay, but by mistake it is given 6,500. Actually मैगजीन और न्यूज़पेपर का अमाउंट था 6,000, ओके, बट बाय मिस्टेक आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है 6,500. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर टेक्स्ट बुक, ओके. उसके मुताबिक आपको आपके बीके टेक्स्ट बुक में चेंजेस करने हैं. सो हियर वी विल मेक वन चेंज दैट amount of magazine and newspaper we will write 6,000, okay. Now we will read the question. From the following receipt and payment account of Bhaurav Patil Polytechnic College Nagpur for the year ending 31st March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Now here we have given receipt and payment account and additional information of Bhaurav Patil Polytechnic College Nagpur, okay, and on the basis of this receipt and payment account and additional information we have to prepare income and expenditure account and balance sheet, okay. Let me read the question. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. Now here receipt and payment account is given for 31st March 2019. So first of all, what will be our current year? Our current year will be, we will make marking here, our CY or current year will be 2018 and 19. Our current year gets close on 31st March 2019. हमारा current year close हो रहा है March 2019 को. So हमारा current financial year होगा 2018 and 19. Okay. Now what will be our last year? Our last year will be 2017 and 2018. Okay. And what will be our following year? हमारा next year क्या होगा? Our next year will be 2019 and 2020. Okay. Now we will do marking of receipts and payment. First of all, we will see receipt side. Now two balance brought down. It's opening balance of cash and bank. Now here we are not going to consider opening balance. हम opening balance को consider नहीं करते हैं. Okay. So we will not do posting of opening balance of cash and bank. Now next receipt is interest. Interest will be transferred to income side. So here we will write I. Donation, tuition fees, admission fees, term fees, all these are income. Okay. So donation will be transferred to income side. Tuition fee will be also transferred to income side. Admission fees will be also transferred to income side. Term fees, drama receipt, okay, it will be also transferred to income side. Next is rent from use of hall. हमने दूसरे को हॉल भाड़े पे दिया था, ओके, और उसका हमें रेंट मिला है. So it will be our income. So it will be transferred to income side. And next is legacies. Now here legacies are capitalized, okay. In receipt side legacies are given, okay, but in bracket they have mentioned capitalized. अगर capitalized नहीं होता तो legacy को हम income side transfer करते थे, okay, but in bracket they have mentioned legacies capitalized. That means legacies will be added in capital fund. अगर कोई भी receipt capitalize होती है तो हमें उसे capital fund में add करना है, okay. So
here we will write liability side. Legacies will be added in capital fund. That's why I will transfer, or we will transfer legacies in liability side. Now next is payment side. Salaries to the teaching staff. Okay, so it is expenditure. Here we will write E. Next is salaries to the office staff. It is also expenditure. So it will be transferred to expenditure side. We will write E. Printing and stationery. It is expenditure. Books. Books is a asset. It's a given details are related with भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निकल कॉलेज. ये कॉलेज का आपको डिटेल्स दिया है. सो इन कॉलेज बुक्स विल बी असेट. कॉलेज के लिए बुक्स क्या होगा? असेट होगा. ओके, सो हियर वी विल राइट ए फॉर बुक्स. नेक्स्ट इज फर्नीचर इज परचेस ऑन 1st January 2019. ड्यूरिंग द ईयर हमने दो असेट को परचेस किया है. वन इज बुक्स. ओके, तो हमने बुक्स को परचेज किया है. एंड सेकेंड असेट इज फर्नीचर. फर्नीचर इज ऑल्सो परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1st April 2019. सो फर्नीचर विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू asset side. Both are assets, books and furniture. Next is drama expense. It will be transferred to expenditure side. Postage will be also transferred to expenditure side. So here we will write E. Next is telephone charges. Telephone charges is our expenditure. So here we will write E. Electricity is our expenditure. So electricity will be transferred to expenditure side. Next is magazine and newspaper. It is also expenditure. So here we will write E for magazines and newspaper. And at the end, by balance carried down means closing balance of cash and bank is given. Now closing balance we will have to consider. हमें क्लोजिंग बैलेंस को कंसीडर करना है. हम ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करते हैं ऑलवेज. ओके, सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बोथ विल बी ट्रांसफर टू असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, सो हियर वी विल राइट A for cash and A for bank. Both are assets. Okay. Now we will read additional information. Now additional information is related with both year. Here additional information of both year is given. 1st April 2018 and 31st March 2019. Now all of you know our receipt and payment account closes on 31st March 2019. Okay. So 31st March 2019 is our current year. Okay. So here we will write CY for 31st March 2019. ये 31st March 2019 का डेटा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस 1st April 2018. 1st April 2018 का जो बैलेंस दिया अप्रैल का 1st April का जो भी बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस होता है. विच वाज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर. जो पिछले साल का 31st March 2018 का क्लोजिंग बैलेंस था. ओके, सो this balance is related with last year. So here we will write LY. Now we can see here additional information is given for last year and for current year. Okay, now for last year we will give only one effect. last year का additional balance होगा तो उसका खाली हमें एक effect देना है. And for current year we will have to give two effects. Okay, now we will do marking. First additional information is related with books. Okay, so we will give number 1 to the books. पहला adjustment books related है. Again first adjustment is related with, you can see this is additional information number 1. It is related with furniture. So here we will give number 1 to the furniture. Next is building fund. It is 8,27,000 in 1st April 2018 and 31st March 2019. Question mark is given. बिल्डिंग फंड का लास्ट ईयर का बैलेंस था 8,27,000 और करंट ईयर के लिए
क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें ढूंढना है. ओके, एंड नेक्स्ट इज कैपिटल फंड. एज पर लास्ट ईयर कैपिटल फंड वाज गिवन 6,11,000. ओके, नाउ कैपिटल फंड एंड बिल्डिंग फंड बोथ विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड. दोनों के दोनों हमें लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर करने हैं. जैसे कि बुक्स एंड फर्नीचर बोथ आर असेट्स ऑफ लास्ट ईयर. ओके, तो ये दोनों का पोस्टिंग हम असेट साइड करेंगे. एंड बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल फंड बोथ विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड. ओके, नाउ बोथ बैलेंस वी हैव टू फाइंड आउट. दोनों के दोनों बैलेंस करंट ईयर के हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके, now we will read adjustment number 2. 60% of donations are for building fund. Okay, and balance is to be treated as a revenue income. Now out of donation 60% donation will be transferred to building fund. डोनेशन में से 60% जो डोनेशन है वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग फंड को ट्रांसफर करना है. एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू income. Okay, so we will give number 2 to the donation. Okay, this adjustment is related with donation. Okay, ये adjustment donation से related है तो हमें donation को number 2 का marking करना है. Now we will discuss this adjustment in detail at the time of solving this adjustment. Okay, now adjustment number 3, outstanding office salaries, office staff salaries rupees 70,000. office staff salary are outstanding 70,000 rupees. So we will give number 3 to the office staff salaries. Now office staff salaries are given here in payment side. So here we will write number 3 to the office staff salaries. Okay, so these are the adjustment which are given in the question. Okay, now we will solve this question. First of all we have to solve additional information or adjustments which are given below the receipt and payment account. हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वन बाय वन. ओके, सो लेट वी स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज बुक्स एज पर लास्ट ईयर 9 लाख. लास्ट ईयर के मुताबिक बुक का बैलेंस है 9 लाख. सो फर्स्ट वी विल राइट इन असेट साइड. हियर वी विल राइट बुक्स एज पर लास्ट ईयर अमाउंट ऑफ बुक्स इज 9 लाख रुपीज. नाउ ये लास्ट ईयर का बैलेंस था बुक्स का. ड्यूरिंग द ईयर वी हैव परचेज बुक्स ऑफ रुपीज 88,000. हमने करंट ईयर के अंदर 88,000 रुपीज का बुक्स को परचेज किया है. ओके, सो इट विल इंक्रीज अवर बुक्स. लास्ट ईयर का बैलेंस था 9 लाख. ड्यूरिंग द ईयर हमने बुक्स को परचेज किया 88,000. इसका मतलब हमारा बुक्स क्या होगा या हमारी एसेट क्या होगी, बढ़ेगी. ओके, सो वी विल ऐड हियर. हम बुक्स में वो बैलेंस ऐड करेंगे जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है. सो हियर वी विल राइट एडिशन और यू कैन राइट परचेज. नाउ ड्यूरिंग द ईयर वी हैव परचेज बुक्स ऑफ रुपीज 88,000. हमने 88,000 का बुक्स परचेज किया है. सो टोटल बुक विल बी 9,88,000. ओके, हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर टोटल बुक था 9,88,000. ओके, लास्ट ईयर का था 9 लाख रुपीज और करंट ईयर में हमने परचेज किया 88,000. सो टोटल बुक्स विल बी 9,88,000. नाउ हियर एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st March 2019 अमाउंट ऑफ बुक और बैलेंस ऑफ बुक was 8,88,000. करंट ईयर का जब एंड हुआ 31st March 2019 को तो हमारे पास बुक का बैलेंस बचा है वह 8,88,000. ओके, नाउ ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास बुक्स था 9,88,000 का. ओके, एंड एट द एंड वो बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया. इट वाज 8,88,000 at the end of the year.
नाउ बुक का बैलेंस क्यों कम हो गया? आप देख रहे हो यहाँ पे बुक का बैलेंस था 9,88,000 ड्यूरिंग द ईयर और वो हो चुका है 8,88,000, मतलब 1 लाख से आपका बुक कम हो चुका है. ओके, नाउ व्हाई दैट बैलेंस हैज डिक्रीज? ये बैलेंस क्यों कम हो गया? बिकॉज वी हैव चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, क्योंकि हमने बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, ऐसा हमें अज्यूम करना है. ओके, व्हेनेवर देयर इज फॉल इन असेट वी विल कॉल इट एज अ डिप्रिसिएशन. जब कोई असेट की वैल्यू कम होती है या असेट का बैलेंस कम होता है तो उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं. सो हियर वी विल राइट डिप्रिसिएशन. Less depreciation on books. Now closing balance is given 8,88,000. So here we will write 8,88,000. ये हमारा closing balance है बुक का, which is at the end of the year. Now you can see balance हमारे पास है 9,88,000. Closing balance is 8,88,000. So there is difference of rupees 1 lakh. Okay. बुक्स पहले थे 9,88,000, अब हो चुके हैं 8,88,000. दैट मीन्स वी हैव चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स ऑफ रुपीज 1 लाख. सो हियर वी विल राइट 1 लाख रुपीज एज अ डिप्रिसिएशन. ओके, नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू expenditure side because depreciation is expenditure for us. So in expenditure side we will write 2 depreciation on books. Depreciation on book is rupees 1 lakh. Okay. Now similar adjustment is there related to furniture. अगर ये एडजस्टमेंट नहीं समझा है तो फर्नीचर का आप एडजस्टमेंट समझो. ओके, तुरंत आपको उसका इफेक्ट समझ में आएगा. Now furniture, opening balance of furniture is 3,26,000. So opening balance of furniture we will write in asset side. Okay, ये तो क्लियर है. So in asset side we will write furniture. Opening balance of furniture is 3,26,000. Now during the year we have purchased furniture on 1st January 2019 78,000. करंट ईयर में हमने 78,000 का फर्नीचर परचेस किया है जो आपको पेमेंट साइड में दिया है. सो हम ऐड करेंगे, वी विल ऐड इट. सो हियर वी विल राइट ऐड एडिशन. एडिशन मींस परचेस. बढ़ गया फर्नीचर तो ऐड करना है. बेचा सोल्ड किया तो लेस करना है, परचेस किया तो ऐड करना है एसेट को. सो एडिशन इन ब्रैकेट विल राइट परचेस. It is rupees 78,000. So total will be 4,04,000. Okay. Now closing balance of furniture is given 3 lakh. बुक्स का फर्नीचर का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3 लाख रुपीज. ओके, एंड ड्यूरिंग द ईयर टोटल फर्नीचर था हमारे पास 4,04,000. नाउ यू कैन सी बैलेंस हमारे पास है 4,04,000 ड्यूरिंग द ईयर और बुक्स फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन वी हैव गॉट बैलेंस ऑफ रुपीज 3 लाख. ओके, सो हियर वी विल चार्ज डिप्रिसिएशन, वी विल राइट लेस डिप्रिसिएशन. हम डिप्रिसिएशन को लेस करेंगे. once again I will explain you. As per opening balance we have got furniture of rupees 26,000. लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उसमें फर्नीचर दिया 3,26,000. ड्यूरिंग द ईयर we have purchased furniture of rupees 78,000. So total furniture we are having during the year is 4,04,000. But closing balance of furniture is 3 lakh at the end of the year. So closing balance we will write in outer column. Closing balance हमेशा हमें outer column में बताना है.
सो 4,04,000 बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 3 लाख। क्यों ये बैलेंस कम हो गया? बिकॉज ऑफ depreciation. So how much depreciation we have charged? 4,04,000 minus 3 lakh. So depreciation will be 1,04,000. Okay. Now second effect we have to give, because this adjustment is related with current year. So that depreciation we will transfer to expenditure side because it is loss. Okay. So here we will write 2 depreciation on furniture. It is 1,04,000. Okay. Now building fund, capital fund, we have to opening balances are given. So balance of building fund we will write in liability side. Okay. Building fund is our we have to show in liability side. Any type of fund, whether there is capital fund, whether there is building fund, we have to show in liability side. Okay. So here we will write building fund. Now there is adjustment on building fund which is related with donation. Okay. So we will write this amount of building fund in inner column. Building fund के ऊपर adjustment है, that's why we will write the amount of building fund in inner column. It is 8,27,000. Next is capital fund. We will write in capital fund in liability side. Okay. Amount of capital fund is 6,11,000. Now closing balance we have to find out. दोनों के दोनों बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड के क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. दोनों के बैलेंस हमें फाइंड आउट करने हैं. दैट वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग ऑल एडजस्टमेंट. ओके. नाउ फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ओवर. Second additional information we will read. 60% of the donations are for building fund. Okay. Now we have received donation of rupees 7 lakh. हमें 7 lakh rupees donation मिल चुका है. Now out of donation of rupees 7 lakh, 60% of the donation will be used for building fund. 60% donation का इस्तेमाल किसके लिए होने वाला है? बिल्डिंग फंड के लिए होने वाला है. ओके. एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम. और उसे छोड़ के जो भी बैलेंस बचेगा इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम. ओके. नाउ वी विल सी दिस. वी विल सॉल्व दिस एडजस्टमेंट. फर्स्ट वी विल राइट डोनेशन. नाउ दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 2. वी विल शो डोनेशन इन इनकम साइड. सो इन इनकम साइड वी विल राइट बाय donation. Amount of donation is given 7 lakh. Okay. Donation की amount है 7 lakh rupees. Now once again we will read this adjustment. 60% of the donation are for building fund. Okay. So total amount of donation is 7 lakh. उसमें से 60% donation हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? बिल्डिंग फंड को ट्रांसफर करना है. ओके. सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम डोनेशन. ओके. हमें डोनेशन क्या करना होगा? 60% बिल्डिंग फंड को ट्रांसफर करना होगा. सो यहां से इनकम साइड से हम डोनेशन को लेस करेंगे. ओके. सो लेस 60% ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड. Okay, now we will do calculation. Amount of donation is 7 lakh into 60%. That means 60 upon 100. ये अमाउंट हम कहाँ भेजने वाले हैं? कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? बिल्डिंग फंड में. ओके. सो डोनेशन जो 7 लाख दिया है वो 60% कहाँ ट्रांसफर करना था? बिल्डिंग फंड को ट्रांसफर करना था. दैट्स वाई हम यहाँ से अमाउंट क्या करेंगे? 60% लेस करेंगे डोनेशन से. Now 7 lakh into 60%, it will be 4,20,000.
Okay, so remaining amount will be it is 4,20,000. So remaining amount is 3,80,000. Now that balance is to be treated as a revenue income. जो हमारा क्या होगा, revenue income होगा. Okay. Now you can see here donation is 7 lakh. 60% donation we have transferred to building fund. ये हमने building fund को transfer किया. Now amount whatever is left 3,80,000 amount बचा है, that will be our revenue income. Okay. Now second effect of donation which we have transferred to building fund, we will add it. Okay, हमें building fund में वो amount क्या करना होगा, add करना होगा, transfer करना होगा, and it will increase our building fund, जिसके कारण हमारा building fund बढ़ जाएगा. So here we will add it. Okay, building fund हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमने donation को कहाँ transfer कर दिया है, building fund को. Okay, so we will add it. Now here we will write donation for building fund. It is rupees 4,20,000. So total will be 12,47,000. Okay. Now next adjustment we will solve. I hope everybody has understood this adjustment of donation transfer to building fund. Okay. First we have to show. First we have to do deduct donation 60% amount from donation and we have to add back in building fund. Okay. Now adjustment number 3. Outstanding office staff salaries rupees 70,000. Office staff salaries outstanding है, paid करना बाकी है. Outstanding means payable. Okay, so salaries to the office staff was rupees 8,55,000. We have paid during the year. हमने during the year office staff को salary paid किया था 8,55,000. That we will write in expenditure side. Okay. So in expenditure side we will write 2 salaries to office staff. It is rupees 8,55,000. Now outstanding office salaries rupees 70,000. Still 70,000 outstanding salary is there. That means salary is payable to the office staff. Okay. Now any expense which is outstanding we have to add back in expenditure side. हमें expenditure side में जाके कोई भी expenditure outstanding है तो वो add करना है. So here we will add outstanding office salaries which is rupees 70,000. Total is 9,25,000. Okay. Now second effect of outstanding salary will be transferred to liability side. Salary outstanding है, expenditure outstanding है, so उसका इफेक्ट हमें कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट के liability side में शो करना है. Any type of expenditure which is outstanding during the year we have to show in liability side. So in liability side we will write outstanding office staff salaries
it is rupees 70,000. Okay. Now all adjustments are over. All three adjustments we have solved. Now we will do posting of receipt and payment account. First is receipt side. Two balance brought down, cash, bank, both balance we are not going to consider. दोनों के दोनों opening balance है जिसे हम consider नहीं करते हैं. Next is interest. Interest will be transferred to income side. So in income side we will write by interest. It is rupees 60,000. So we will write this amount in outer column. Next is donation. Already we have solved adjustment number 2 on donation. Next is tuition fee 15 lakh. So here we will write by tuition fee. ₹15 lakh. Now it's an educational institution. That's why tuition fees received from the student will be income. Okay. So we have shown tuition fee in income side. Admission fee 65,000. So here we will write by. We will show here by admission fees. Amount of admission fee is rupees 65,000. We will write this amount in outer column. Next is term fee 4 lakhs. So here we will write by term fees. ₹4 lakh. Next is drama receipt 1 lakh rupees. Next is rent from use of hall 6,000. So here we will write by rent from use of hall 6,000. Next is legacies. Now here legacies are capitalized. Okay, so we are not going to show in income side because it is not our revenue income. अगर कोई भी income, कोई भी receipt capitalize होती है तो वो हमारी revenue receipt नहीं हो सकती, and that's why we will add in capital fund. Because of that our capital fund will increase, so हमें उसे add करना है. So here we will write add legacies capitalize. It is rupees 60,000. 6 lakh 11,000 plus 60,000, it will be 6 lakh 71,000. Okay. Now receipt side is over. We will do posting of payment side. Salaries to the teaching staff, it is rupees 15 lakh. So we will show in expenditure side. In expenditure side we will write to salaries to office staff. It is salaries to teaching staff, not office staff.
8,55,000, sorry, 15 lakh. Now next is printing and stationery. Now we will show printing and stationery in expenditure side. Here we will write amount of printing and stationery is rupees 27,000. Next is books. Then furniture, already there was adjustment number 1 on books and furniture, we have solved. Next is drama expenses, it will transfer to expenditure side. So here we will write 2 drama expenses. It is rupees 90,000. Next is postage, 7,000. So here we will write 2 postage, 7,000. Next is telephone charges, 6,500. So 2 telephone charges, 6,500. Now once after telephone charges, next is electricity. So here we will write 2 electricity, amount of electricity is 61,000. Next is magazines and newspaper, 6,000. So here we will write 2 magazines and newspaper, 6,000 rupees. I hope everybody has made correction in magazine and newspaper. By mistake it was given 6,500 in your टेक्स्ट बुक. मिस्टेक से आपके टेक्स्ट बुक में मैगजीन और न्यूज़पेपर का अमाउंट दिया था 6,500. ओके, आपको करेक्शन करना है 6,000 रुपीज इन योर बीके टेक्स्ट बुक. Next is balance carried down. Cash, bank, both are closing balance and both will be transferred to asset side. So closing balance of cash is 62,000 and bank 3,23,000. Once again I will tell you, opening balance we cannot consider opening balance in income and expenditure account and balance sheet, but we have to show closing balance. closing balance हमें balance sheet के asset side में देना है. ओके, रिकॉर्ड करना है. Now posting of receipt and payment and all adjustments are over. Okay, now we will close income and expenditure account first. Okay, now we will do total of income and expenditure account. सबसे पहले हम income and expenditure account को close करेंगे, दोनों की total करेंगे. We will do total of both side, expenditure side and income side. Now one mistake I have done here while recording donation. Amount of donation in outer column is wrong. 7 lakh minus 4,22,000. It is 2,80,000. एक मिस्टेक हुआ था. 7 lakh minus
building for 4,20,000, it is 2,80,000. Okay. Now we will close expenditure side first. Total of expenditure side is 28,26,000. We'll write here. Total of expenditure side is 28,26,000. Whereas total of this income side is 24,11,000. We have done total of both side, total of expenditure side and total of income side. Okay. Now total of expenditure side is 28,26,000 and total of income side is 24,11,000. So here total of expenditure side is greater than total of income side. Income side का total कम है, expenditure side का total ज्यादा है. Okay, so there will be a deficit. Okay, so we will write total of expenditure side in both side. जो total ज्यादा है वो हमें पहले लिखना है. So 28,26,000 we will write in both side, expenditure side and in income side. Now from total of expenditure side we will minus total of income side, we will get deficit. एक्सपेंडिचर से आप अगर इनकम का टोटल लेस करोगे तो आपको डेफिसिट मिलेगा. ओके, सो डेफिसिट विल बी 4,15,000. Now we will write deficit in income side. एक्सपेंडिचर का साइड, एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा था, इनकम का टोटल कम है. ओके, सो हियर वी विल गेट डिफरेंस. हियर वी विल राइट डेफिसिट. हियर वी विल राइट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. ओके, आपको डेफिसिट कैसे मिला है? एक्सपेंडिचर का टोटल इनकम से ज्यादा था, दैट इज कॉल्ड एज अ डेफिसिट. इट इज 4,15,000. वी विल अंडरलाइन इट. नाउ डेफिसिट इज अ नेगेटिव बैलेंस. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी विल डिडक्ट और वी विल माइनस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल फंड. अगर सरप्लस है तो हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है. ओके, डेफिसिट नेगेटिव बैलेंस होता है और उसके वजह से वो कैपिटल फंड से लेस किया जाता है. सो हियर वी विल राइट लेस deficit 4,15,000. Total is 2,56,000. Now after closing receipt and payment account, sorry, income and expenditure account, we will do total of liability side and asset side. Total of liability side is 15,73,000. So here we will write total of liability side $15,73,000, whereas total of asset side is also 15,73,000. Okay, so total of both side, liability side and asset side is equal. It is 15,73,000 in both. Now this is how we have tallied balance sheet. Okay, now up to now we have solved 6 questions of not for profit concern. In my next lecture we are going to solve one more question of not for profit concern. Once again, thank you so much for watching my video.